Hello, teachers. Today, Mr. Teacher came to visit me and he had a very specific question. Question was कि जब भी वो ग्रुप एक्टिविटी करते हैं क्लास में, क्लास बहुत ही इनडिसिप्लिन हो जाती है. इनडिसिप्लिन होने के साथ साथ वो क्लास में वो एक्टिविटी कंप्लीट ही नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एंड पूरा क्लास का टाइम जस्ट वेस्ट हो जाता है. सो मिस्टर टीचर, मेरे पास सोल्यूशन है आपके लिए. द सोल्यूशन इज, देखिए, ग्रुप एक्टिविटी को हम अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज उसके अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं और अपने बेनिफिट्स होते हैं. एंड अल्टीमेटली in life it will be a group where your kids will be going and talking. It will never be like a boss and a person. Okay, तब तो सुनना ही है, but then जब ग्रुप में इंटरैक्ट करना है तब तो हमें इक्वल प्रेजेंस दिखानी है अपनी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किड्स को एक्सप्लेन करें कि ग्रुप्स में किस तरीके से काम होता है. ओके, तो वो कैसे करते हैं मिस्टर टीचर? I'm going to tell you, you can quickly note it down. If you also have a pen and paper, it would be great if you can just note down the steps. Number one, जब भी आप ग्रुप एक्टिविटी प्लान करें, ग्रुप एक्टिविटी हैज टू बी इन द गाइडेड प्रैक्टिस टाइम. ओके, गाइडेड प्रैक्टिस टाइम हमारे क्लास का मिडिल वाला टाइम होता है जब हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर चुके होते हैं न्यू कंटेंट की और हम अब प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं. तो जब भी हम बच्चों को ग्रुप्स मूव कर रहे हैं, हम क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज हम उनको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं. ओके, वो ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं जो उनको करना था, हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर उनको पता नहीं है तो वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. ओके, तो आईएनएम के दौरान जब हम लेसन ले रहे हैं तब हम बच्चों को ऑलरेडी सिखा चुके हैं जो उनको सीखना था, अब वो प्रैक्टिस करेंगे. अब हम ग्रुप में आ गए हैं. ओके, या हम ग्रुप्स बनाने वाले हैं. अगर टीचर ने ग्रुप्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं और आपको सिर्फ इतना बोलना है कि अब आप ग्रुप्स मूव करो, दैट इज ग्रेट. बट अगर आपने नए ग्रुप्स बनाए हैं तो यू नीड टू कॉल आउट द नेम्स ऑफ द किड्स हु आर इन ग्रुप्स एंड उन्हें बताइए कि आपको किधर जाना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप. ग्रुप को इंट्रोड्यूस करिए, ग्रुप्स क्यों बने हैं ये इंट्रोड्यूस करिए, आप क्या करने वाले हैं ग्रुप के अंदर. एंड द थर्ड वन इज ग्रुप के में वो मूव कैसे होंगे. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, when I call out your names, you have to get up with your notebook, pencil, sharpener, and eraser and move to this place. Clear instructions, very specific. Otherwise, अगर आप बोलोगे move to this place, सबसे पहले, ma'am, do we need to carry our notebooks? That will be the first question. So be very clear with your instructions, okay? So now the kids start moving. Now the names I'll call out will get up with all their things required for this class and they will move towards this side. And they will stand in a row. Okay, this will be your first. Now when they have moved, now everybody please take your seat in these corners. They will sit. You can also instruct them to not touch the things which are already lying on the desk, or if there are things which are out, please keep them back in their bags and pack your bag. Okay, then after this your groups are ready. Now what you need to do, you need to tell them what are the rules of sitting inside a group. आप किससे बात कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, can you get up from your chair. Okay, if you need any help, what you need to do, you can do this action if you need any help, so that जब भी आप बच्चे को देखेंगे ये action करते हो, you can quickly go towards that group and help them. Okay, then when can they speak, when can they not speak, ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए. Okay, next is उनको आपको explain करना पड़ेगा उनको क्या activity करनी है ग्रुप के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेक्स्ट रखा है और उनको एक एक करके एक सेंटेंस पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, सो द फर्स्ट पर्सन रीड्स and then quickly reads loudly, others will be listening, and then the person will pass it to the next person. The next person takes it, reads loudly, and all others will be listening. Okay, so ऐसे करके आपको explain करना पड़ेगा कि बच्चों को क्या करना है. Now soon they will all be done. जब उनका हो जाएगा तब वो आपको कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया है टास्क. Okay, so again they will shout ma'am complete, ma'am complete. So you can quickly tell them, all the members of the group will come to know कि task हो गया है. They will just raise their thumb like this and I will come to know. Okay, and the team who works quietly will be given 5 points. Give them a reward so that they are forced to be on track. They are forced to be in discipline. Okay, so that's all for rules. Now when they are done with the activity, you will be summing up the activity for all the groups. You will be talking about all what they did in the group. You will be discussing the answers and all. After that, tell them how to move back in their own right
place. Okay, कैसे move होंगे? So maybe you can just tell them, team number 1, you can get up and move towards the center of the classroom. Okay, now go and stand near your chairs. Okay, the person who is sitting on their chairs will get up and move back. So whatever is your process of moving them back to their places, do that, explain that to them. Okay, जब आपको पता रहेगा चीजें कैसे करनी है, तभी आप बच्चों को भी बता पाओगे कि उनको स्मूथली चीजें कैसे करनी है. अगर आपको नहीं पता रहेगा, आप उन्हें नहीं बता पाओगे, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी chaos in the classroom. So how can you avoid chaos? By being really specific about every single step you take inside the classroom. यही करना है, राइट? सो जब भी आप ग्रुप्स में मूव करोगे तो आपके पास ग्रुप की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, इंट्रोडक्शंस होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए ग्रुप के, एंड एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एंड देन मूविंग बैक इनटू ग्रुप्स. ओके, that was it about the groups. And do not hesitate to do the group activity. एक बार प्रॉब्लम होगी, 2 बार प्रॉब्लम होगी, 3rd टाइम से बच्चों को खुद ही पता चल जाएगा कि ग्रुप एक्टिविटी में किस तरीके से हम अपने आप को कैरी करते हैं. Okay, you will also be a person who will be able to handle all problems which arise during the group activity. Okay, so do not hesitate to keep the group activity, because uske khud ke learning experiences hote hain. Kids learn much more when we give them liberty, we give them ownership of learning. Okay, so do not have your class like a very normal regular class where only the teacher talks, the student listens, or just a discussion, but give them ownership of having a discussion in their own closed group of people. Okay, so they get to know each other better when they work in closed groups. That's all for today. If you have any question or any situation which you would like to discuss, कि आपने group activity करा but ऐसा हुआ, you can put it down in the comment section. I would get back to you. Thank you so much, everyone. Take care of yourself and happy learning.